Today I have decided that I should bring up this topic good nature, as I know कि I have already discussed about this essay earlier, but still I found that there are some points which I haven't discussed. So in this video I'm gonna talk about what Joseph Addison has talked in this essay in about good nature, a man's personality. Okay, so first let's talk about who Joseph Addison was. So Joseph Addison was a essayist during 18th century, 1672 to 1719. Okay, he was best known for his periodicals that were the Tatler and the Spectator. ओके सो द टेटलर एंड द स्पेक्टेटर. सो ये दोनों ना बहुत प्रोमिनेंट पीरियोडिकल्स है जो कि जोसेफ एडिसन ने रिचर्ड स्टील के साथ लिखा है. ओके RICHARD रिचर्ड स्टील. ओके सो पीरियोडिकल्स क्या होता है? तो पीरियोडिकल्स वो होता है जैसे कि द टेटलर है, इसके अंदर ना बहुत सारा एसेज लिखा हुआ है. वैसे ही द स्पेक्टेटर भी एक पीरियोडिकल है जिसके अंदर विच कंटेन्स नंबर ऑफ एसेज. ओके तो इसी तरह का और भी वर्क्स है जोसेफ एडिसन का, जैसे कि कैटो जो कि एक सक्सेसफुल ट्रेजेडी है. ये एक प्ले है कैटो, सक्सेसफुल ट्रेजेडी. द गार्डियन वो भी एक पीरियोडिकल ही है, The Guardian. Now let's move upon to good nature. What is good nature? What is this essay good nature about? So good nature एक most prominent essay है जो कि जोसेफ एडिसन ने पब्लिश कराया था in his periodical The Spectator, which he co-founded with Richard Steele. Okay, so in this essay, first Addison he praises the virtues of good nature. Okay, so इसमें पहला है the virtues of good nature, यानी कि emphasize कर रहा है इसमें एडिसन as this thing, the virtue is a valuable quality in individuals. He likely argues that it is a characteristics that is worth cultivating among each. Okay, so what are these virtues या फिर what are these good qualities which Addison emphasizes on? So good natured individuals are typically friendly and approachable. They have a pleasant and agreeable demeanor. मतलब उनको देख के ही पता चल जाता है कि you can talk to them. Okay, so they make people जो है ना, they make people enjoyable around them. They are kind and compassionate and often display a genuine concern for the well-being and happiness of others. यानी कि एक मेन कैरेक्टर की तरह होते हैं ये लोग. ओके सो उनके पास सारा गुड क्वालिटीज़ होता है, सारा वर्च्यूज़, दूसरे को लगे कि हाँ ये इंजॉयबल है, प्लेजेंटली बात कर रहा है, फ्रेंडली, अप्रोचेबल है. ओके एंड थिंक्स फॉर अदर्स वेल बीइंग एंड हैप्पीनेस. Addison likely emphasizes the generosity of these with good nature. They are more likely to help and support others in times of need. Addison may have discussed how these good nature are more tolerant and accepting of the differences in others, leading to greater social harmony. Addison, he often connects good nature to moral virtues. He may have he argues that a good natured disposition allies with ethical and moral principles. Means they do not do any bad things. Okay, they have their moral and ethics which they follow, their own rules which they follow. Okay, so good natured individuals can positively influence those around them, which contributes to a more harmonious and cooperative society. इसका मतलब है कि अगर if you are with a good natured person, then you can develop your own personality. So in this way good natured individuals are contributing to a more cooperative society. Okay, so these virtues जो है ना collectively create an individual
who is not only pleasant to be with but also a force for good in their social interactions. Next, Edison argues or highlights how good nature can lead to more harmonious and pleasant social interactions. By this, he wants to say that people with good nature, they are generally more approachable and enjoyable to be around. They make others feel comfortable in their presence, which encourages open and friendly communication. So, good-natured person often possesses patience and understandings required to resolve conflicts. They serve as positive role model. ओके सो यहाँ कैसे सोशल या फिर प्लेजेंट इंटरेक्शंस हो सकता है उसी के ऊपर सिर्फ बताया गया है कि वो लोग के पास एक उन लोग का नेचर या उन लोग के पास एक ऐसा क्वालिटी है कि वो लोग कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर सके. कहीं पर कुछ झगड़ा हो रहा है या फिर कहीं पर कुछ गलत बात हो रहा है तो वो लोग उसको रिजॉल्व कर सकते. ओके सो दे गुड नेचर पीपल है ना, वो लोग एक पॉजिटिव रोल मॉडल की तरह सर्व करते हैं. एंड अदर्स आर इंस्पायर्ड बाय देयर काइंडनेस एंड जनरॉसिटी and they are more likely to imitate these behaviors. So others जो है ना, जैसे हम लोग मान लो कोई मूवी देख रहे हैं जिसमें हम लोग को मेन कैरेक्टर हीरोइन का मतलब वो जिस तरीके से बात कर रही है जो भी वो है जिस तो वो हम लोग को क्या होता है ना कि उसका नेचर या उसका पर्सनालिटी हम लोग को पसंद आ जाता है. तो हम लोग क्या करते हैं, we try to imitate that personality in ourselves या फिर her behavior. Okay, so the same thing happens around our surroundings too. Like if we like someone's behavior we try to copy it. Okay, so यहाँ पर जो है ना good natured individuals they tend to treat others with respect and considerations. This fosters a sense of mutual respect among social circles. People are naturally drawn to these good-natured behavior. Okay, this attraction can lead to the formation of strong and lasting social bonds. मान लो क्लास में भी if you are a new child and you are going to a new class. Okay, so there also अगर आप नए नए फ्रेंड्स जब बनाते हो तो आप पहले देखते हो कि किसका बिहेवियर अच्छा है, उसी के साथ ऑब्वियसली जाके बात करते या फिर उसको ही. तो इस टाइप का है कि बिहेवियर मैटर करता है हर फील्ड में और यू आर अट्रैक्टेड टू देम हु हैव और हु आर विथ गुड नेचर. ओके सो गुड नेचर ऑफन इन्वॉल्व्स अ विलिंगनेस टू हेल्प एंड सपोर्ट अदर्स. दिस कोऑपरेटिव जो एटीट्यूड है गुड नेचर का इज कंड्यूसिव टू कोलैबोरेटिव एफर्ट्स एंड टीम वर्क. सो हियर एडिसन जो है ना ही बेसिकली आर्ग्यूड दैट गुड नेचर जो है प्रमोट्स अ पॉजिटिव एंड कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर सोशल इंटरेक्शंस. ओके, क्या प्रपोज करता है? पॉजिटिव एंड conducive environment. Okay, can you see this? Positive and conducive environment वो propose करता है. तो यहाँ पर क्या होता है कि जब वो पॉजिटिव या कंड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रपोज करता है सोशल इंटरेक्शंस को लेके तो पीपल जो है ना पीपल आर more inclined to cooperate, communicate and work together towards common goals. Okay, communicate and cooperate and they are more to work together on their goals. Okay, can you see these points? ठीक है. So, this way it creates a harmonious atmosphere where individuals value each other's well-being and happiness, ultimately leading to smoother and more pleasant interactions. तो इसमें क्या होता है कि people जो है ना they value each other's happiness, well-being, which leads to smooth communications or interactions. Okay? Just a second.
Now, the next point is, I'll start from here. So, the next point is Addison, he contrasts good nature with negative traits like ill temper. So, Addison contrasts good nature with negative traits. Okay. So, these negative traits are like ill temper, okay, like ill temper या फिर selfishness or rude behavior, rude personality. Okay, so these underscoring the benefits of cultivating a positive character. So, Addison, he has discussed how ill temper or easily provoked temper can lead to conflicts. Okay, so easily um, easily provoked temper जो है ना, it leads to conflicts. Easily provoked tempers leads to conflicts. ओके सो एंड डिस्टर्ब्स और ना ये अगर कॉन्फ्लिक्ट्स होगा तो जो सोसाइटी, ये जो हारमोनी है बिटवीन सोसाइटी में, यहाँ पर डिस्ट्रप्शंस होगा. ठीक है. सो गुड नेचर ऑन द अदर हैंड, ये इल टेम्पर के बारे में बात हुआ कि वो लोग क्या होता है ना कि दे easily lose their temper and are easily into conflicts, so this disrupts society. So on the other hand, good nature would be portrayed as patient and understanding. ठीक है. तो good nature क्या है? On the other hand, they are patient and understanding personality. They a lack of good nature often results to rude behavior, making it difficult for individuals to relate positively to one another. Good nature, they often include empathy and compassion. Addison argues that those without good nature may lack the ability to understand and relate to others' feelings and experiences. So this is the point. I thought I should write it down for you all. You can take a screenshot or note it down. That good nature includes empathy and compassion. Addison argues that those without good nature, they lack the ability to understand. अगर तुम्हारा good nature ही नहीं होगा, अगर तुमको किसी के लिए sympathy या empathy feel ही नहीं हो रहा है, तो you cannot understand others feelings or experience those things. Okay, so अगर तुम वो सब नहीं कर पाओगे, relate ही नहीं कर पाओगे अपने साथ, अपने पास से, तो तुम लोग किसी और का feelings को समझ नहीं पाओगे. So by contrasting good nature with these negative traits, Addison, he underscores the idea that cultivating a kind disposition is not only virtuous but also essential for promoting harmonious social interactions and maintaining positive relationships within society. ठीक है. तो इससे एडिसन हम लोग को ये बता रहे हैं कि ये जो नेगेटिव ट्रेट्स है ना, ये एक पॉजिटिव सोसाइटी को कभी कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएगा. ठीक है, कभी कंस्ट्रक्ट कर ही नहीं सकता. अगर तुम्हारा पर्सनालिटी नेगेटिव है या फिर तुम सेल्फिश हो, रूड हो, तो यू कैन नॉट डेवलप पॉजिटिव रिलेशंस विद इन सोसाइटी एंड society cannot be in harmony. Okay. So our next point is this essay explains or explores how good nature contributes to more cooperative and friendly society and fosters more positive relationships among individuals. Okay, so here एडिसन एम्फसाइज कर रहा है कि जो गुड नेचर इंडिविजुअल्स है, दे कॉन्ट्रीब्यूट टू ओवरऑल हार्मनी ऑफ सोसाइटी. दिस काइंडनेस क्रिएट्स अ मोर प्लेजेंट एंड कोऑपरेटिव सोशल एनवायरनमेंट.
He argues that good nature fosters mutual respect among individuals within society. People are more likely to treat each other with consideration and kindness. तो हर कोई चाहता है कि मतलब अगर आप किसी को ट्रीट करो या फिर अगर हम किसी को अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं तो सामने वाले मेरे को अच्छे से ट्रीट करे, और सोसाइटी इसी से आगे बढ़ता है, हार्मनी इसी से आता है, ठीक है। सो गुड नेचर जो है ना, हर अगर तुम बाहर कहीं जाके किसी से बात करो तो सामने वाले भी तुम्हारे साथ गुड नेचर मतलब अच्छे से ही, अच्छा नेचर से ही बात करेगा। ही विल नॉट स्टार्ट आर्ग्यूइंग या फिर अपना सेल्फिशनेस दिखाएगा, ठीक है। सो इसी तरीके से पीपल जो है ना एक दूसरे से इसी से म्यूचुअल फीलिंग्स के साथ बंधे हुए हैं और एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं। पीपल आर मोर लाइकली टू ट्रीट ईच अदर विथ कंसिडरेशन एंड काइंडनेस। एडिसन पॉइंट्स आउट दैट जो नेचर है दो गुड नेचर इंडिविजुअल्स जो है दे सर्व्स एज अ पॉजिटिव रोल मॉडल, सो दे प्लेड अ पाइवोटल रोल इन स्ट्रेंथनिंग पर्सनल रिलेशनशिप्स। तो ना गुड नेचर जो इंडिविजुअल्स है दे मेक और दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन स्ट्रेंथनिंग दी रिलेशनशिप्स, ठीक है। वो लोग हमेशा चाहेंगे कि सबके साथ फ्रेंडशिप बना ही रहे। सो एडिसन डिस्कस करते हैं कि हाउ इंडिविजुअल्स आर बेटर इक्विप्ड टू बिल्ड एंड मेंटेन पॉजिटिव लास्टिंग रिलेशनशिप्स बेस्ड ऑन ट्रस्ट एंड म्यूचुअल अफेक्शन। A good natured behavior reduces conflicts and tensions in society. People are less likely to engage in confrontations when dealing with these who possess a good nature. तो अगर सामने वाला गुड नेचर मतलब वो अपना अच्छा नेचर से बात कर रहा है तो अगर एक इंसान गुड नेचर का है, ठीक है, मतलब अच्छा नेचर का, और बगल वाला जो है जिससे वो बात कर रहा है वो इंसान नहीं चाहेगा कि हम इससे कुछ भी लड़ाई करें, ठीक है। क्योंकि मतलब अगर आपका एक क्यूट पर्सनालिटी है कि एक अच्छा पर्सनालिटी के साथ आप लड़ना नहीं चाहते हो, ठीक है। सो यू डू नॉट एंगेज योर सेल्फ इन डीलिंग विथ कन्फ्रंटेशन और एंगेज इन कन्फ्रंटेशंस with those who possess good nature. Addison discusses how good nature is instrumental in building a sense of community and social bonds. People are drawn to others with these qualities, leading to the formation of strong social networks. Here, Addison he advocates the idea of individuals with good nature not only enhances their own lives but also have a positive effect on broader society. तो गुड नेचर ना सिर्फ अपने फैमिली या अपना लाइफ को ही नहीं सुधारता है, वो आगे ब्रॉडर सोसाइटी के लिए भी पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। जहाँ पर भी तुम जाते हो वहाँ पर मतलब इन्वायरमेंट अच्छा हो जाता है, ठीक है। अगर इफ़ यू आर टॉकिंग विद समवन नाइसली, ठीक है, तो वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा होता है, मतलब सब कोई को अच्छा लगता है। तो ये एक ब्रॉडर सोसाइटल सेंस में भी इफेक्ट करता है। ओके, सो दैट्स इट अबाउट गुड नेचर. Let's end this video, and if you have any questions regarding it, directly ask in the comment box.